Hi everyone, I am Dr. Astha Dayal and I am the lead consultant in gynecology with CK Birla Hospital. And today we're going to talk about a very important topic, which is the myths and facts about miscarriages. मिसकैरेज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत पेनफुल है। तो आज हम जानते हैं इसके बारे में और क्या मिथ्स हैं, क्या यूजुअल कॉमन बिलीव्स हैं जो कि गलत हैं, उनको आज हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहला मिथ जो लोगों को लगता है कि मिसकैरेज इज़ वेरी रेयर, पर ऐसा सच नहीं है। अब if you see the world data, about 20% pregnancies will end up in a miscarriage. So 1 in 5 people will have a miscarriage, even if they do everything right. So it is a common thing to have a miscarriage. And another thing which people believe is कि अगर एक बार उनको miscarriage हो गया है तो आगे they get so dejected that they cannot have a healthy pregnancy again, which is also not true. If you've had a miscarriage once, then in your second time also you have a 1 in 5 risk of having a miscarriage. So your risk does not increase after one miscarriage, and it is always possible to have a healthy pregnancy after a miscarriage. Now another very common myth is that the woman feels that maybe I did something wrong because of which I had a miscarriage. लोगों को लगता है कि मैंने पाइनएप्पल पपाया खा लिया, मैंने कुछ गलत दवाई खा ली, मेरे को फीवर हो गया, मैंने सीढ़ियाँ चल ली, मैंने एक्सरसाइज कर लिया, मैंने हेवी वेट उठा लिया, इसलिए मुझे मिसकैरेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आर एक्चुअली मिथ्स। In early pregnancy, the usual causes of miscarriage are genetic causes, जिसके ऊपर आपका कोई control नहीं है. It's the way the egg and sperm are made, and it's not your fault because people start getting guilty about it. So एक तो 50% cases में genetic होता है जिसमें आपका कोई role नहीं है, and बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं जिससे ये पता चला है कि स्ट्रेस या कुछ खाना पीना या कुछ एक्सरसाइज करने से आपको मिसकैरेज नहीं होता है. ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, विच यू शुड नॉट डू इफ़ यू आर प्रेग्नेंट. सेकेंडली, योर एज ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, दैट इज समथिंग यू हैव कंट्रोल ओवर. एज अ वुमेन्स एज इंक्रीजेज, जब आप 35 ईयर्स एंड अबव हो जाते हैं, 40 एंड अबव हो जाते हैं, आपके मिसकैरेज के रिस्क बढ़ते जाते हैं. सो इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट अ मिसकैरेज, यू शुड स्टार्ट प्लानिंग योर प्रेगनेंसी at the right age. Then another thing that can contribute is obesity. So अगर आप overweight हैं तो you should lose weight. And other things like your thyroid levels, your sugar levels, if you have a medical problem, you should correct it first. If you're on some medications, you should change it to safer options before planning a pregnancy. So you do have control over some factors, but not all the factors that can affect a miscarriage. Now another myth is कि early pregnancy में bleeding तो common है, तो हमको डॉक्टर के पास क्यों जाना है, which is wrong. There is some sort of bleeding which is called implantation bleeding, जो कि normal होती है early pregnancy में, but bleeding can also be a sign of miscarriage or a threatening to miscarry. So if you have any bleeding in early pregnancy, then you must go to your doctor. We might advise you an ultrasound. अल्ट्रासाउंड को लेके भी लोगों को लगता है कि अल्ट्रासाउंड कराने से मिसकैरेज हो गया, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं होता है. तो अगर आपको कुछ भी ब्लीडिंग हो रही है अर्ली प्रेगनेंसी में, यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर. Another myth is that अब हम कब प्लान करें एक मिसकैरेज के बाद. कुछ लोग बोलते हैं हमको 6 महीने वेट करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 3 महीने वेट करना चाहिए. ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है. जब भी आप इमोशनली एंड फिजिकली रेडी हैं टू ट्राई, यू कैन इवन स्टार्ट ट्राइंग आफ्टर योर नेक्स्ट पीरियड. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इमोशनली ऑल्सो यू टेक टाइम टू रिकवर. यू टेक एटलीस्ट 6 weeks to recover emotionally. If you are not feeling good about it, if you are depressed, if you are anxious, you should seek help. There are psychologists, there are support groups. You can also talk to your doctor. And not just women but men also start getting emotionally affected by a miscarriage. So you should first deal with that and then plan your next pregnancy. So you must understand that all miscarriages are not preventable, but majority of them are preventable, and there is hope for everybody who miscarries, and you should all discuss all your options with your doctor rather than believing in myths. Thank you.